Good morning, students. Today we are starting our next topic. It's related to the chlorine family, and very important parts of this chlorine that is known as the HCl. A very short topic is here, and after that we are also starting the oxo acids of this chlorine, and we are completing our halogen family. So see guys, the HCl is a concentrated acid you are generally using to create an acidic medium, and it is using for the preparation of the different types of compound inside your labs. Sometimes you are using in salt analysis and in titrations is also, but today's here we are talking about the preparation, physical properties and chemical properties of this HCl. So generally HCl is prepared by the salt cake methods. Okay, it is prepared by the salt cake methods. They have two preparations, industrial as well as laboratory, but both are same. But the condition is totally different in case of the HCl. So it is prepared. That was first prepared by the Glauber. Glauber's prepared in 1649 by using the NaCl and reaction in between the NaCl and H2SO4. The next one after that same method is using in our laboratory also for the preparations of HCls. Okay. So first of all we starting from its preparations. Preparation method is generally known as the salt cake methods. That is a salt cake method. Why that one is known as the salt cake methods? In this method, first of all, what we are doing, we are taking the large amount of the HCl, okay, large amount of salt of NaCl and treating with the H2SO4. Okay. In that conditions, we are taking a condition 420 Kelvin because that reaction is normally take place inside our room is also. But few amount of reactions they required. So it is a which kind of reactions? Endothermic reactions. It means they require heat from the outside. After that, what happened? Actually, it forms NaHSO4 and H react with Cl. NaHSO4, sodium bisulfate. What happened here? Actually, after the formation of the sodium bisulfate, this sodium bisulfate create a layer surrounding to the NaCl. जब आपका NaHSO4 बनता है, तो वो बनते ही क्या करता है? जो रिएक्शन से पार्टिसिपेट करने वाला NaCl होता है, उसकी चारों तरफ एक लेयर बना लेता है. So that layer is known as the salt cake. That is formed by the salt. That layer is formed by the NaHSO4 surrounding to the common salt. That one is a common salt. And that layer is known as the salt cake method. तो इससे क्या होगा? When they form a layer surrounding to this NaCl, so जितना NaCl है वो H2SO4 के साथ react नहीं कर पाता. Okay, so ये reactions क्या हो जाती है? Stop हो जाती है. In that case, we are getting a very less amount of HCl. So we need for the requirement more temperature. फिर next step में क्या होगा? जो आपका NaHSO4 बना, उसी को NaCl के साथ दोबारा हीट करा जाता है, but at that time temperature is 820 Kelvin. अब आप temperatures कितना देंगे? Double. So at that time they form what? Na2SO4. They giving you Na2SO4 and you are getting HNCl at the high temperature. So that process is known as the salt cake methods because due to the formation of NaHSO4, they creating a layer surrounding to this NaCl. So those NaCl want to participate in these chemical reactions. They are not able to participate due to the formation of the layer of NaHSO4. So that layer is generally is known as the salt cake layer or salt cake methods. So this is only one method for the preparations of this HCl. But ये माना जाता है कि if you want to prepare the HCl inside your lab, you take hydrogen gas and chlorine gas in the presence of platinum. The hydrogen chlorine directly combine with each other, they form twice HCl. That one is also good, but in the traditional methods or in laboratory methods, we are preparing HCl by this process. ये आपकी इंडस्ट्रियल मेथड्स में भी जाती है और जनरली आपकी लेबोरेटरी प्रिपरेशंस में भी आती है. So only one method is here for the preparation of HCl. Okay, that is known as the salt cake method, and you know why this method is known as the salt cake. The next one is physical properties. The next one is we are talking about is another properties generally is known as the physical properties. What happened in case of the physical properties? Have you seen already
that chemical inside your labs, it is a colorless, highly pungent smell. Its physical property says the first one is a pungent smell. Its boiling point is also very less, 249 Kelvin. Okay. The second one, colorless liquid. Colorless liquid. And due to the presence of hydrogen, they easily participating in form a hydrogen bonding. Soluble in water, in H2O, due to the formation of hydrogen bonding. So due to the formations of the hydrogen bonding, the HCl is easily soluble in water and its boiling point is very high when they dissolve in water because they form the intermolecular hydrogen bonding. So these are the physical properties of the HCl. The next one is the chemical properties of HCl. Very simple chemical properties are here, but in one of them, one is very important. Okay, I hope you have heard about the name. The HCl is generally using by the in jewelry industry. Okay, for the preparations of the aqua regia. So first of all, we are starting. The next one is chemical properties. Before describing the aqua regia, first property is acidic in nature. Acidic in nature. Why the acetic acid is acidic in nature? See, you know the HCl giving H positive, Cl negative, and you know the structure of water. Water is H2O, but oxygens have two lone pair of electron. Okay, so this lone pair of electron having a negative charge, they are always pulling this positive charge onwards. So this positive charge, when they dissolve in water HCl, they are giving a positive charge, and positive charge is moving toward this water, and they are giving you, अगर इससे H attached हो जाए तो क्या बनाएगा? H3O positive ion, and they are giving you Cl negative. So what is the definitions of the acids? The acids are those substances when they dissolve in water, they are giving you a H positive ion. But in the present scenario, the acid is defined on the behalf of hydronium ion. So H3O positive is generally known as the hydronium ion, you know very well. The hydronium ions, so we are going to define the definitions of acids on the behalf of the formations of hydronium ion. So what is the definitions on the behalf of hydronium ion? The acids are those substances when they dissolve in water, they giving you more number of hydronium ion is known as the acidic compound. तो वो substances या वो acidic components जिनको आप water में dissolve करते हो और water में dissolve करने पे वो आपको more number of hydronium ions provide करते हैं, these are known as its acids. And the Ka value, this is not acidity constant, this is a dissociation constant. Acidity constant ये होता है pKa. Okay, दोनों में बहुत बड़ा difference है. pKa value जितनी ज़्यादा होती है, pKa value जितनी ज़्यादा होगी, acidity उतनी कम होगी. But Ka value जितनी ज़्यादा होगी, वो उतना ही ज़्यादा acidic होगा. Ka is generally denoted to the dissociation constant. Dissociation constant मतलब कि water में जाकर कितनी जल्दी H positive ion देगा. So the value of for HCl dissociation constant is 10 to the power 7. It means it is highly acidic in nature. Okay, so that the dissociation constant for this HCl is 10 to the power 7. So it is highly acidic in nature. So that's why the HCl is more acidic compound. See the next chemical properties. The next chemical property says when HCl react with metal, and you know it's a very simple reaction. When we are pouring chemicals or HCl on the surface of metal, the metal is capable to highly react with chlorine because chlorine is a halogen and halogens are highly reactive in nature. So the third one is reactions with metal. You take any one metal and two metals. Example is here. The first of all, I am giving you the metal is the Na. Okay, it is reacting with Cl. यहाँ पे शायद किसी हीट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती because sodium is highly reactive. The sodium is more reactive. It displays hydrogen from its salt. तो आपका क्या बनाएगा? HCl. Twice molecules will form twice HCl and it giving you
sorry, so 2 NaCl reacted with Cl, it giving you twice NaCl and they releasing which gas? Hydrogen gas. So that is the characteristic reactions. If any metal react with any acids, they always liberating a colorless gas is known as the hydrogen gas. The second things, just giving you example, Al is react with the HCl. Okay, it's twice here if you are taking, so here we are taking 6HCl because एक aluminium 3 chlorine से react करेगा because its valency is +3, तो 2 aluminium 6 chlorine से react करेंगे. So it giving you twice AlCl3 and then liberating you how many hydrogen? Thrice H2. So that is the characteristic reactions in which a particular metal react with HCl. They always liberating hydrogen gas and they forming their chloride. If you want, you can just more examples of other reactions of HCl with another metals. Other metal is also here, lead is here, zinc form their chloride. It's the simplest reactions. Okay, ये 10 based reactions है, याद कर सकते हैं. The next one is reactions with HNO3. That is very important. This reaction is important because it is useful for the preparations of aqua regia. Aqua regia is a kind of solution. The third one is reactions with HNO3. Reactions with HNO3. इसको when we are taking HCl plus HNO3. HNO3 means 3 part of HCl and 1 part of HNO3. That solution is known as the aqua regia. Aqua regia in Hindi is known as Amliraj. Okay, that is a useful for we are going to prepare that solution when any metals is not dissolving in any kind of liquids. Okay, जब कोई metals किसी liquid में melt नहीं हो रहा है, उसमें आप dilute डालिए, concentrated डालिए, कुछ भी add करिए. And when they are not start melting, at that time we are requiring the aqua regia. What is the importance of the aqua regia? When we are preparing the aqua regia in HCl and HNO3 in that ratio, so they giving you a nascent chlorine. That chlorine is capable to form a salt with the heavy metal and immediately they capable to dissolve the heavy metal salt. जैसे gold, non-reactive metals कहे जाते हैं. Platinum is also. Silver is also. So ये ऐसे metals होते हैं जो किसी भी acid से reactions नहीं करते. That's why they are non-reactive metal. But what happen in case of the jewelry industry? If you want to clear up and again you want to just recreate the shining of this jewelry, so we need to dip that jewelry inside this aqua regia, and this aqua regia is helpful to remove their dirt and just create a reshining properties of this jewelry. So what is the importance? The formations of this chlorine. They able to form a nascent chlorine and immediately nascent chlorine is able to react with metal and they dissolve it. उसमें metals को dip करने पे nascent chlorine इतनी highly reactive होती है कि वो metals को क्या कर देती है? Dissolve कर देती है. The example is here we are taking HCl. Okay. So see, if you are taking here HCl, so how many? Generally we are taking examples of the golds. The gold is reactive with the, inside the solutions. So what happened? The HNO3 is capable to react with each other. यहाँ पे कौन-कौन से ions बनेंगे? एक तो H ions बनेगा, they giving you H ions, और दूसरा क्या बनेगा आपका? Cl minus ions, H ion, Cl minus ion, और क्या बनेगा आपका? NO3 minus. Okay. The such type ions are forming. और ये जो golds है, orate बोलते हैं. Scientific name और a nomenclature name is orate. वैसे तो आप इसे gold बोलेंगे common language में. The next another name is orate. Orate, okay. अभी आप जब coordination chemistry पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये names arises होंगे. The orate or the golds have capability to form how many bond? 4 bond with chlorine atom. Because that is a nascent chlorine, they are able to react with the gold. The gold always giving you such a complex AuCl4 minus. That is tetrachloro 3 orate. Tetrachloro 3 orate. What is the meaning of the 3? 3 means the oxidation state of gold in such complexes 3. आप X करके निकाल सकते हैं. How many chlorine is there? 4 chlorine is there. Okay. If the 4 chlorine मतलब कितने हाइड्रोजन होने चाहिए थे? यहाँ 3 रेशियो लेंगे तो 3 HCl और 1 HNO3 था, तो 3 + 1 कितना हो गया आपका? 4H हो गया. अब देखिए गोल्ड ने तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर क्या बना दिया? अपना ऑरेट फॉर्मेशंस कर दिया है. हाइड्रोजन कितने बचे? 4. वो यहाँ से ऑक्सीजन लेंगे,
2 हाइड्रोजन को वाटर बनाने के लिए 1 ऑक्सीजन चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन को वाटर बनाने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए? 2। तो यहां से कितनी ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करेंगी? 2 ऑक्सीजन। सो इट गिविंग यू ट्वाइस H2O। बचा क्या? 2 ऑक्सीजन निकल चुकी हैं, 1 ऑक्सीजन बची, सो गिविंग यू अ NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड. So that reaction is take place inside the solutions when you are going to dip a heavy metal inside this aqua regia. The aqua regia is prepared in a 3:1. 1 part of HNO3 and 3 part of HCl. Okay, same as well as the reactions take place with platinum. Okay, you know the platinum is also here, they also giving you H positive. यहाँ पे भी Cl negative निकलेगा और क्या निकलेगा? NO3. So the platinum is also have tendency to react with the chlorine. अब कितने क्लोरीन से? The platinum have tendency to form a bond with 6 chlorine. कम से कम 6 क्लोरीन की रिक्वायरमेंट हमको यहाँ पे चाहिए. तो 6 क्लोरीन अगर आपका बनेगा तो 6 क्लोरीन हम सपोज हम इसको ले लेते हैं, 6 क्लोरीन ले लेते हैं. एंड हाइड्रोजन यू टेक, अगर यहाँ पे 6 ले रहे हैं तो 6 क्लोरीन ये होगा, तो 6 यहाँ पे लगेगा, 6 7 8, सपोज 6H पॉजिटिव ले लीजिए, इसको मेंशन नहीं करिए, और ये NO3 हो गया है. तो प्लैटिनम इज जनरली गिविंग यू अ कंपाउंड PtCl6 -1. ओके, और सिमिलरली बाय प्रोडक्ट ऐसे निकलेगा twice H2O. So at that time the heavy metal is capable to dissolve inside the aqua regia. तो यहाँ पे क्या होगा, जो heavy metals होते हैं वो aqua regia में dissolve हो जाते हैं. It's a properties of this aqua regia. So when the HCl is able to react with HNO3, they giving you a solution is known as the aqua regia. You are also performing that practicals when you are going for the salt analysis. If you want to dissolve a mercury, the mercury is not capable to react with any acids. So at that time we are going to prepare the aqua regia. So aqua regia is capable to dissolve the mercury salt. तब जाकर हम इसका क्या करेंगे, salt analysis करते हैं. So we need to dissolve first of all the metal, then we are performing its different kinds of test. That is another reaction. See after that aqua regia, the another reactions is the reactions with salt. The last reaction, okay. The last reactions of HCl is reactions with salt. The acid is reacting with the different kinds of salt, and fourth is reactions with salt. Reactions with salt. So see the reactions with salt. I am giving you here the HCl and salt is suppose metal bicarbonate. Metal bicarbonate with the salt. It's a very simplest reaction. मैंने पहले भी बोला है, किसी कंपाउंड में अगर कार्बोनेट हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है. तो यहाँ पे जो Na है वो तो रिएक्ट कर जाएगा आपके Cl से, it giving you a salt NaCl. क्या बचा? 2 हाइड्रोजन बचे, यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लीजिए, क्या निकला? H2O. अब क्या बचा? यहाँ से एक ऑक्सीजन ले ली थी तो कितनी ऑक्सीजन बची? 2 is releasing in the form of CO2. So when any acid react with any carbonate salt, maybe it's a bicarbonate or maybe a carbonate, they giving you a same kind of product. Like HCl again react with Na2CO3. अब Na2CO3 के साथ ले लीजिए HCl, 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे. 2Na react with 2Cl, okay. तो giving you a twice NaCl plus 2H is taking 1 oxygen from here, it giving you H2O. एक ऑक्सीजन दे दी तो कितनी ऑक्सीजन बची? 2, so it's giving you a CO2. So when the acid react with metal carbonate or maybe react with the metal carbonate or maybe react with the metal bicarbonate, they giving you a carbon dioxide gas. That is the first reactions. Then another reactions, another salts to be Na2S. Okay. Here we are also taking twice HCl. So 2Na react with 2Cl, it giving you twice NaCl. And 2H react with S, giving you a H2S. Dihydrogen sulfide or hydrogen sulfide, when the H2S is formed, its smell is appearing like to be a rotten egg. Rotten egg smells आती है जब H2S form होती है. So that is the properties of HCl when they react with the salt. They giving you different kinds of the gases and all these things. Okay. So you just perform the same reactions with the other salt is also they giving you different kinds of the product. The next one, the last one is precipitation reaction, PPT formation, or we say the element detections. So the last one is the reactions is a precipitation reactions in which the HCl react with some salt and giving you a precipitate, some color. That reaction is a precipitation reaction.
In precipitation reactions, we are taking first of all AgNO3 is a colorless salt. When you are adding, ये सिल्वर का टेस्ट है आपने देखा होगा, when you are adding few drops of HCl, the HNO3 is reacting with H, giving you HNO3. It is a colorless. But when Ag reacting with Cl, they giving you AgCl. It is white color precipitate. तो अगर आपके सॉल्ट में अगर सिल्वर अवेलेबल है या क्लोरीन अवेलेबल है, तो क्लोरीन अवेलेबल है तो सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो Cl के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट देगा. क्लोरीन के टेस्ट में आपने करा होगा, इज अ कंफर्मेटिव टेस्ट. और अगर आपको सिल्वर का पता करना है तो आप HCl डालेंगे तो सिल्वर जो क्लोरीन सिल्वर के साथ रिएक्ट करेगा या सिल्वर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा एंड गिविंग यू अ व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट. द नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन इज द रिएक्शंस विद लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस. इस पे भी अगर आप HCl डालेंगे तो क्या होगा, H react with NO3 so it giving you twice HNO3 and lead react with chloride it giving you PbCl2. तो PbCl2 का कलर फॉर्मेशंस होगा ब्लैक कलर का. So these are the precipitation reactions is given by the HCl with HCl by salt. Okay, so these are the only few properties of HCl. So your HCl is also complete and its uses. HCl is generally uses in the medicine chemistry, or the another one is the jewelry for especially for the preparations of the aqua regia and different salt analysis process. So guys, यहाँ पे आपका जो HCl वाला पार्ट है वो होता है complete. अब हम हैलोजन फैमिली का लास्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, that is ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन. ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन. ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन्स देखिए, जैसे सल्फो आपने सल्फर का पढ़ा था, सल्फो एसिड्स ऑफ सल्फर H2SO4, H2SO7, H2SO8, वैसे ही हैलोजन भी अपने क्या कराते हैं, फॉर्मेशंस करते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ये हैलोजन्स हैं, ये अपने ऑक्सो एसिड्स बताएंगे. यहाँ पे क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट. तो जनरली ये वो हैलो एसिड्स बनाते हैं जिसमें ये इतने टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. Only the fluorine is capable to form only one oxo acids. Its formula is HOF. In HOF इसके अलावा फ्लोरीन कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं बनाता जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो, +5 हो, +7 हो. Only in this state the fluorine is capable to its formation is oxidation 1. Okay, HOF. Its name is just giving you HOCl. It is a hypofluorous acid. Hypofluorous acid, and this is known as the hypochlorous acid. अब क्लोरीन क्या करता है, +3 वाला कंपाउंड भी बनाता है. इसका फॉर्मूला है HClO2. इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 3. 5 वाला भी फॉर्मेशन करेगा HClO3 और 7 वाला भी फॉर्मेशन करेगा, दैट इज HClO4. Okay, so these type of compound is formed. Same Br also formed, giving you HOBr, hypobromous acid. HBrO2, HBrO3 and HBrO4 also. Here also HOI. Okay, HiO2, HiO3 iodic acid, HiO4. The name of that compound, ये सभी ऊपर वाले अस कहलाएंगे, हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस. ओके, और ये आयोडिक्स में जाएगा हाइपोआइडस. नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपका क्या कराएगा, क्लोरस. इनको केवल क्लोरस कहते हैं, इसे ब्रोमस. क्लोरस एसिड, ब्रोमस एसिड. ओके, आयोड्स एसिड्स. उसके नीचे आएंगे क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड. और उसके नीचे आएंगे परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड. सेम ये कैसा होगा, हाइपोब्रोमस, हाइपोब्रोमस एसिड. ये क्या होगा, ब्रोमस एसिड, ब्रोमस एसिड. ये क्या होगा, ब्रोमिक एसिड. ये क्या होगा, परब्रोमिक एसिड. So these are the compound, these are the oxo acids of halogen.
ये ऑक्सो एसिड्स हैं जिसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ओनली फ्लोरीन इज कैपेबल टू फॉर्म इट्स ओनली 1 कंपाउंड्स। ठीक है, देखिए एक का फॉर्मूला याद रख लीजिए, बाकी के आपको खुद ब खुद बन जाएंगे सेम काइंड ऑफ, जैसे HOCl है HOBr है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हैं तो यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हैं, बस क्लोरीन की जगह क्या लगाना है Br, बाकी का सेम फॉर्मेशन रहेगा। और यहाँ पे ये इतनी तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेंगे, शो करेंगे। These are known as the oxo acids of the halogen। जरा सा इनके स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं और उनकी एसिडिटी के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ओके, so these are the oxo acids of halogen, except fluorine only have tendency to form one oxo acids। so देखिए इनके स्ट्रक्चर्स को अगर साइड्स पे फॉर्मेशंस करें तो HOCl का स्ट्रक्चर्स कैसे होगा, HO और Cl। ओके, दैट वन इज द स्ट्रक्चर HOCl2। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था गाइस, 3 था। ओके, दैट इज 3, दैट वन इज 5 एंड दैट वन इज 7। तो जो आपका क्लोरीन का है वो कितना बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, 3। सबका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, Cl की जगह Br लगा देना, Cl की जगह I लगा देना। ओके, द नेक्स्ट वन इज HClO3, वहां 5 है तो यहाँ फ्लोरीन कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, 5 बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, O और H, बाकी का क्या रहेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे इस तरह से। आप दिखाना चाहें तो ठीक है। द नेक्स्ट वन इज HClO4। HClO4 में कितने बॉन्ड्स होंगे, 7 बॉन्ड्स आपके होंगे। क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और O और HClO4। ओके, तो ये these are the structure in that compound। Its oxidation state 5 क्योंकि इसके 5 बॉन्ड हैं, यहाँ पे oxidation state 3 क्योंकि इसके 3 बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट केवल 1, इसका 1 बॉन्ड्स है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 से जुड़ा है तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है। सो दीज आर द स्ट्रक्चर डायग्राम्स ऑफ द ऑक्सो एसिड्स ऑफ द हैलोजन। अब जरा इनकी एसिडिटी के बारे में देख लीजिए, व्हिच वन इज मोर एसिडिक एंड व्हिच वन इज लेस एसिडिक। तो एक बात आपको यहीं पे इंट्रोड्यूस करा दूं, इन एसिडिक कंपाउंड्स में जिस कंपाउंड में एसिडिक स्टेट सबसे, ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होती है, वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। जैसे मैंने आपको इतने सारे कंपाउंड कराए थे, जैसे बताया था HOCl, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, 1। फिर उसके बाद कराया था HClO2, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था इसका, 3। फिर आपको बताया था HClO, फिर क्या बताया था आपको, HClO3, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, +5। फिर क्या होगा, HClO4, यहाँ क्या था, +7। तो इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, here from here to here the acidic character increasing, acidic character increasing। इसका ध्यान रखना, ये 1 मार्क्स का हमेशा अरेंजिंग ऑर्डर्स में आता है। इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वेश्चन इज आल्सो इफ एनी कंपाउंड, ये क्लोरीन के केस में नहीं, ये कितना ही आप अगर आप हैवी मेटल्स के केस में भी ले लेंगे, किसी भी एलिमेंट के केस में, तो यही होता है कि जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होता है वो सबसे ज्यादा क्या करता है, आपका एसिडिक नेचर का होता है। सो व्हेन द ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजिंग, when the oxidation number decreasing the acidity also decreasing, when oxidation number increasing the acidity also increasing। इसका मतलब जो आपका पर क्लोरिक एसिड था वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है और जो आपका हाइपोक्लोरस एसिड था वो सबसे कम एसिडिक होता है। एक तो आपको ये फंडा पता चल गया कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने पे उसकी एसिडिटी भी इंक्रीज होती है, तो फाइंड आउट कर लेना और इस तरह से उसको अरेंज कर लेना। बट सेकंड कंसेप्ट क्या है, you just try, I'm giving you the lots of problem related to that one। मेरे पास है HOF, फिर मेरे पास है HOCl, फिर मेरे पास है HOBr और मेरे पास है HOI। एसिडिक का मतलब जानते हैं, कौन H पॉजिटिव इजीली दे देगा, ठीक है। अब देखिए फ्लोरीन सबसे छोटा है तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन पुल करने की पावर है वो सबसे ज्यादा है, तो जैसे ही फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये इलेक्ट्रॉन्स यहां आएंगे, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये बॉन्ड्स इधर आएंगे, ब्रोमीन भी अगर इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन भी इधर आएगा और आयोडीन भी इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। मगर ये सबसे पहले बताइए कि कौन सा एलिमेंट सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचकर H पॉजिटिव निकालेगा। ओके, ऑब्वियसली फ्लोरीन। यू नो इन हैलोजन जैसे जैसे साइज बढ़ता है इलेक्ट्रॉन पुल करने की पावर क्या हो जाती है, डिक्रीज।
अब आयोडीन को इलेक्ट्रॉनों को पुल करने में क्या लगेगा? टाइम, क्योंकि इसका न्यूक्लियस की पावर क्या है? बहुत कम है। तो H पॉजिटिव का निकलना भी क्या होगा? बहुत रेयर होगा। बट फ्लोरीन इज द स्मॉलेस्ट इन देयर साइज, सो द फ्लोरीन इज पुलिंग इलेक्ट्रॉन वेरी रैपिडली। फ्लोरीन का साइज छोटा होने से इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से पुल करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन तेजी से पुल करेगा तो H उतनी तेजी से कहां निकलेगा? बाहर। तो इसका मतलब व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर, द एसिडिक स्ट्रेंथ StrEngth स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग, यानी कि इन सभी कंपाउंड में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? HOF। और जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी गाइस ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस की। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, and maybe you are better understand when I'm giving you lots of problem related to that one. So that's all for the day. The next day we are studying on the interhalogen compound, and after that the last a small topic is inert gas. Okay, so plus just try to solve the problem related to that one. It's good for you and me also, because the time is very less and you are preparing for your competitive examination. Okay, so these type of questions are coming, so don't ignore such type of compounds. Sometimes a 1 marks question is coming, not only one time, the 2 and more 3 times they are asking you that question in different ways. So please try to solve that questions related to that one. Okay, thank you.